This is a big India Today world exclusive that we're bringing to you today on the crackdown on ISI terror plots and the active recruitment bid by Pakistan in Pakistan-occupied Kashmir. But it isn't just the usual kind of terror recruitment that has been reported for many years. Take a look at these details. Pakistan's intelligence agency, the ISI, has started a new maneuver in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. At least 150 youth from POK have been forcibly abducted from their homes, kidnapped by the ISI, and are being trained and radicalized against their will into becoming terrorists to be infiltrated into India. The Traders Association of POK has alleged that in the last 2 months, more than 150 youth have been abducted in this manner. And this is just one organization making this claim. Who knows how many more people have been abducted in this scary manner. Not just that, they've also claimed that several children, minors, are missing from madrasas in POK. Local authorities have appealed to the Pakistan Army for help and threatened to protest in view of the threats faced by common citizens in Pakistan-occupied Kashmir. This is yet another terrifying example of how the Pakistani state is spreading its terror tentacles. They've abducted youth, they've kidnapped children from madrasas, all to feed the terror machinery. जिले से 18 बच्चे इससे पहले इसी दौरान आए। ये सुन के मुझे बहुत ही ताज्जुब हुआ कि एक खिते से, एक डिस्ट्रिक्ट से 18 बच्चों की गुमशुदगी और मजीद हमारे 2 बच्चे 20 तालिब इल्मों की गुमशुदगी, ये एक संगीन तरीन मामला है। वो आला से पाक जाते हैं तो बगैर शनाख्ती कार्ड के हमारे बच्चे कैसे पाक जाते हैं? और ये सवाल है कि जिस बच्चे के पास शनाख्ती कार्ड भी नहीं है, उसको आप क्राउड पे भी नहीं भेज सकते हैं। वो कैसे किधर गया, कौन गया, कोई तो पता होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये एक वो जो काउंसलिंग था, एक प्री प्लान है, लोगों को उठाया जा रहा है। अगर इसको रोकने की कोशिश न की गई तो फिर ये काम रुकेगा नहीं। And India Today's Jitendra Bahadur Singh, the only journalist to bring these facts in front of the people of India and the world. Jitendra, पहले ये बहुत बेहतरीन स्टोरी है, ये एक इन्वेस्टिगेशन है जो सामने लाता है कुछ फैक्ट्स जो पीओके में हो रहा है, जो the world has been ignorant of what is happening. लेकिन एक बार जितेंद्र एक्सप्लेन कीजिए डिटेल में कि ये मोडस ऑपरेंडी क्या है, ये यूथ जो है, ये लोग, ये युवा लोग जो हैं, ये बच्चे जो हैं, कहां से अबडक्ट हो रहे हैं और उनके साथ क्या होता है उसके बाद। देखिए, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पहले जिहाद के नाम पर लगातार पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों को वहां पर ट्रेन करती थी, लेकिन अब उसके पास कोई तरीका नहीं बचा है। ये जिहाद को मानने वाले लोग वहां पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। यही वजह है, सूत्रों ने बताया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, पाकिस्तान की आर्मी और कुछ आतंकी कमांडर जो कि अफगानिस्तान से वहां से वापस लौटे हैं, उन सभी आतंकी कमांडरों को लेकर के ये तमाम लोग जो हैं अलग अलग जगहों पर, चाहे वो मुजफ्फराबाद का इलाका हो, क्वेटा का इलाका हो या फिर बालाकोट का इलाका हो, इन तमाम जगहों से लोगों को लेकर के आते हैं और उसके बाद जबरदस्ती उनको एबडक्ट किया जाता है और फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने हमें बताया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पाक अधिकृत कश्मीर में एक जगह तेजिन पड़ती है जहां पर पाकिस्तान आर्मी का पुराना आर्मी कैंप था। उस कैंप में इन युवाओं को लेकर के आया जाता है और उसके बाद वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इस तरीके का एक बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान अब जिस तरीके से जिहाद के नाम पर आतंक की फैक्ट्री पाक अधिकृत कश्मीर में चला रहा था, वहां के लोग अब इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिहाद के नाम पर नहीं भेजेंगे। इस वजह से ज्यादा संख्या में लोगों को वहां से एबडक्ट किया गया और उसके बाद उनको एक गुप्त स्थान में ले जाकर के उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब वहां के लोकल्स जो हैं वो इस बात को लेकर के सवाल उठाने लगे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके बच्चों को अगर वापस नहीं दिया गया आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के द्वारा, तो वो लोग हंगामा करेंगे और हंगामा सिर्फ पाक अधिकृत कश्मीर में नहीं, वो लोग इस्लामाबाद में जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे। तो अब इस तरीके पाक अधिकृत कश्मीर से उठने लगी है। Jitendra, thank you very much for joining us. धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए on these excellent details of a story that nobody else has had the guts to bring forward. And remember, and Gaurav Sawant is with us. Gaurav, this is POK. In other words, the people of POK are considered
part of the Indian state, and this has to be looked at very differently from the usual terror machinery that Pakistan uses in the AFPAC region, on Pakistani soil, abducting people from POK and radicalize them and converting them into terrorists, is going to have to elicit a completely different kind of response from India. Shiv, you're right. India needs to highlight this, and in a big way. Pakistan used this template in Jammu and Kashmir for decades. Remember in the early 1990s when mosques in Kashmir Valley were used to chant slogans against the Kashmiri Pandits and oust them from the valley. That genocide that was carried out with mosques being used to chant, Raliv, Galiv, ya Chaliv, something like that is happening right now. Of course, not against Pandits in POK, but the locals in POJK being used by the same elements, whether it's Lashkar-e-Taiba or Jaish-e-Mohammed, all backed by Pakistan's ISI. The youngsters are being kidnapped. They're being abducted, they're being brainwashed, and who are these people? Majority of them who've either lost a single parent or the parents are too poor. This template, Shiv, you'd recall, and Jitendra knows well, was even used in the case of Ajmal Amir Kasab, who incidentally was from Pakistan's mainland Punjab province. So a poor boy is picked up, radicalized, trained by Hafiz Saeed and Pakistan's ISI, and launched into Mumbai for 2611. Similarly, these boys in POJK are being organized, but sadly, unlike the Kashmir of 1990s, in POJK today, parents are saying, no, we will not permit this. We will raise international hue and cry about it if Pakistan continues with this attempt.